السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضا سے منی اینڈ بینکنگ کے 25 لیکچر میں ہو رہی ہے. آج کا ہمارا لیکچر بیسیکلی پچھلے ہی لیکچر کی کنٹینیوشن ہے. دیٹس وائی آئی وڈ لائک کہ وی شوڈ ریوائز what we have discussed in the previous lecture and then we are going to take a start on the new lecture. If you try to recall, پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی about the financial institutions or specifically within the financial institutions we started talking about the commercial banks. اب commercial banks کے اندر ہم نے کہا کہ let's look at the balance sheet of the commercial bank. اور وہ بیلنس شیٹ دیکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک بینک جو ہے اس کے ٹوٹل ایسٹس آر اکول ٹو دی لائبلٹیز اینڈ دی کیپیٹل آف دی بینک. ہم اس آئیڈینٹی کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف دی بیلنس شیٹ. تو بیلنس شیٹ کے ہمارے ایز دی ورڈ بیلنس شیٹ ٹیلز اس دو حصے ہیں اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے برابر ہوں گے تو بیلنس شیٹ ول بی ان بیلنس. سو دی ون سائڈ از دی ٹوٹل ایسٹس اینڈ دی ادر سائڈ از دی لائبلٹیز اینڈ دی اونرز کیپیٹل. اب ہم نے ان ٹوٹل ایسٹس اور ٹوٹل لائبلٹیز کی مزید ڈیٹیل کو دیکھنا چاہا اینڈ وی سیڈ کہ ہمارے ایک کمرشل بینک کی بیلنس شیٹ جو ہے دیٹ نارملی از different from the balance sheet of a manufacturing concern. اس میں سب سے پہلے ہم نے بات کی ایسٹ سائڈ سے. ایسٹس میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مینوفیکچرنگ کنسرن ہے تو اس کا جو کیش ود اے بینک ہے دیٹ از دی کرنٹ ایسٹ rather the most liquid asset which is available with the manufacturing concern. لیکن وہی کیش ود the bank from the bank's point of view is not classified as an asset. کیونکہ وہ obligation ہے بینک کی جو اس نے پے کرنی ہے to the depositor holder on the demand of depositor. اب ہم اس کو کہاں کلاسیفائی کرتے ہیں؟ Deposits are classified on the bank's balance sheet on the liability side. جبکہ ہمارے پاس جب مینوفیکچرنگ کنسرن کی بات کرتے ہیں تو وہی ڈپازٹ جو ہیں وہ ایسٹس ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم لونز کی بات کرتے ہیں another important or the striking difference between the balance sheet of a bank and the balance sheet of a manufacturing concern کہ ایک مینوفیکچرنگ کنسرن جب لون لیتی ہے تو that is classified as an obligation. تو اس کو ہم کہاں لکھیں گے؟ شارٹ ٹرم لون ہے تو کرنٹ لائبلٹی میں، لانگ ٹرم لون ہے تو ہم اس کو لانگ ٹرم لائبلٹی میں لکھیں گے. جبکہ بینک جب لون ایکسٹینڈ کرتا ہے تو دیٹ از کلاسیفائڈ انڈر دی ایسٹ فار دیٹ پرٹیکولر بینک. تو اس لیے ہم نے جو ہے بینک کی بیلنس شیٹ کو اینالائز کرنے کے لیے ایسٹس اور لائبلٹیز کو سیپریٹلی ان ڈیپتھ جو ہے وہ دیکھا. آن دی ایسٹ سائڈ وی سیڈ اوکے ہمارے پاس سب سے پہلا آئٹم جو ہے ہم نے کہا کیش آئٹمس. اب ان کیش آئٹمس میں سب سے پہلا جو ہے والٹ کیش. یہ وہ کیش ہے جو کہ بینک کے والٹ میں موجود ہے، والٹ میں موجود ہے، دیٹ از اویلیبل ود بینک. اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، یہ وہ ڈپازٹ ہوتا ہے جو کہ بینک سینٹرل بینک کے ساتھ رکھتا ہے. اس کے بعد دیر از اندر آئٹم جس کو ہم کہتے ہیں کیش آئٹمس ان دا پروسیس آف کلیکشن، جس میں کیش ہمارے پاس موجود نہیں ہے، رادر a check has been deposited in a bank اور وہ چیک جو ہے that is gone for the clearing. وہ in the process of the clearing ہے بٹ ہم نے اس میں بک میں اپنے بکس میں انٹری کرنے کے بعد اس کو پروسیسنگ کے اندر ڈال دیا ہے. So that again is another item. پھر ہم جب ہے کیش ہی کے سلسلے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں ریزروز کی. اب ریزروز از a kind of part of our cash reserves. ان ریزروز میں ہمارے پاس دو پورشن ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ہمارے پاس ریکوائرڈ ریزرو. اب وہ ریکوائرڈ ریزرو جو ہے وہ لیگلی ریکوائرڈ ریزرو ریشو کے مطابق ایک بینک جو ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے یا وہ سینٹرل بینک میں رکھتا ہے.
اس سے زیادہ اگر ریزرو ہو بینک کے پاس تو دیٹ از نون ایز دی ایکسیس ریزرو. لیکن نارملی جو ہے ہمارا کیش آئٹم جو ہے دے پرووائڈ بینک ود دی لکوڈیٹی. ایک طرف تو یہ اس کا بینیفٹ ہے کہ ایز اینڈ وین نیڈیڈ جب بھی ڈپازیٹرز کلیم کرتے ہیں اپنے ایسٹس کو تو بینک ہیز دیٹ کیش ریڈیلی اویلیبل ٹو میک آؤٹ دی پیمنٹ. لیکن دوسری طرف ہمارے یہ جو ایکسیس ریزروز ہوتے ہیں ان کی ایک اپرچونٹی کاسٹ ہے بیکاز دے آر ناٹ ارننگ اینی انٹرسٹ. تو بینک ہیز ٹو کیپ اے بیلنس بٹوین دی liquidity which is the benefit side of it and the cost which is the opportunity cost of the earning lost on not making an investment. تو یہ تو ہمارا پہلا ہیڈ ہے on the asset side for a particular bank. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیکورٹیز کی کہ جو ہمارا بینک ہے when bank collects the deposits from the depositors whether they are the checking account, time account or they are the demand account or demand deposits. تو اس میں سے کیا کرتا ہے بینک؟ بینک اس میں سے کچھ حصہ جو ہے ارننگ کے لیے انویسٹ کرتا ہے ان دی سیکورٹیز آف دی ادر بزنس اینٹیز اور ان کے اوپر سرٹن انٹرسٹ جو ہے وہ ارن کرتا ہے. سیکورٹیز میں ہمارے پاس بانڈس بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے پاس اکویٹیز بھی ہو سکتی ہیں, شارٹ ٹرم بھی ہو سکتی ہے سیکورٹی اینڈ دی لانگ ٹرم بھی ہو سکتی ہے. گورنمنٹ کی ایشو کی بھی سیکورٹیز بھی ہو سکتی ہیں اینڈ کارپوریٹ سیکورٹیز بھی ہو سکتی ہیں. اس کے بعد فائنلی ہم بات کرتے ہیں ایسٹ سائڈ کے اوپر ہی لونس کی. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ بینکس کے لیے لون جو ہیں دے آر این ایسٹ because they have extended the loan to some other business entity or the consumers. اور وہ obligation کن کی ہے جنہوں نے لون لیا ہے بینک کے پوائنٹ آف ویو سے that basically is an asset. اب لون جو ہے وہ کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. They can be the business loans, they can be the consumer loans, real estate type loans. یہ سارے لونز جو ہیں from the bank's point of view they are the assets. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بینک کی لائبلٹی سائڈ کی. لائبلٹیز میں بینک کی سب سے بڑی لائبلٹی جو ہوتی ہے دیٹ از دی ڈپازٹس, کیونکہ بینک کا رول کیا ہے ٹو ایکٹ ایز این انٹرمیڈیری بٹوین دی سیور اینڈ دی بارور. اور جو سیور جو ہے وہ ڈپازٹ کی شکل میں ہینڈ اوور کرتے ہیں اپنے سرپلس فنڈس کو ٹو دی بینک. تو اس لیے بینک کی آبلیگیشن سب سے بڑی کیا ہوتی ہے دی ڈپازٹ it has collected from the depositors. Within the deposit we can talk about کہ checking account میں جو deposit ہوئے normally ان کے اوپر interest rate is very very low. اس کے بعد ہمارے پاس demand deposits ہو جاتے ہیں جس کے اوپر interest rate is relatively high and finally ہمارے پاس time deposits بھی ہوتے ہیں. اب time deposits میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ we talk about the CDs, سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹس, جن کی میچورٹی 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے 1 year بھی ہو سکتی ہے. سو ڈیپینڈنگ آن وٹ ایور دی ٹائپ آف دی ڈپازٹ از ہمارے پاس ایک ہورائزن ہے, ایک سیٹ ہے جس کے اندر مختلف قسم کے ڈپازٹس ہیں اینڈ دے آر دی بیسک اور دی پرائم لائبلٹی فرام آ کمرشل بینکس پوائنٹ آف ویو. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نیکسٹ آئٹم کیا ہے آن دی لائبلٹی سائڈ. لائبلٹی سائڈ کے اوپر نیکسٹ آئٹم ہے بینک کی بوروئنگ. تو جب ہم بات کرتے ہیں بینک کی بوروئنگ کی تو بینک بھی جسٹ لائک اینی مینوفیکچرنگ کنسرن ایز اینڈ وین نیڈیڈ بیسس پہ کین گو ہیڈ اینڈ بورو فنڈس فرام دی منی مارکیٹ اینڈ فرام دی کیپیٹل مارکیٹ. تو بوروئنگ کے سلسلے میں دیر آر 2 main sources of borrowing for a commercial point of view. ایک ہے ہمارا کہ بینک کین بورو فرام دی ادر بینکس اور اس بوروئنگ کو ہم کہتے ہیں انٹر بینک بوروئنگ, اور اس کے اوپر جو انٹرسٹ ریٹ چارج ہوتا ہے دیٹ از نون ایز دی فیڈرل فنڈز ریٹ. تو فیڈرل فنڈ ریٹ کے اوپر ایک بینک جو کہ ڈیفیشنٹ ہے کیش میں از گوئنگ ٹو بورو فرام another بینک جس کے پاس سرپلس کیش از اویلیبل. تو اس میں بوروئنگ جو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دی بینک وچ از بوروئنگ is paying an interest to the bank
who is supplying the sufficient fund or the additional fund to meet the liquidity requirement of bank number 1 or the first bank. दूसरी तरफ जो है बैंक बोरो कर सकता है from another institution, और वो दूसरा इंस्टीट्यूशन क्या है? That is basically the central bank. तो बैंक्स जब सेंट्रल बैंक से बोरो करते हैं तो क्या करते हैं? नॉर्मली उनके पास जो सिक्योरिटीज हैं जो कि एसेट है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डिपॉजिट करा देते हैं टू द सेंट्रल बैंक, और उनके ऊपर एक इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करता है जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट रेट. इन अदर वर्ड्स वो सिक्योरिटीज को डिस्काउंट कराते हैं बैंक फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, इसलिए उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है हम उसको डिस्काउंट रेट ही कहते हैं. तो दैट बेसिकली मेक्स द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैंक. अब लायबिलिटी के बाद हमारे पास बैंक का कैपिटल आ गया, बिकॉज वी सेड कि हमारी आइडेंटिटी क्या है कि टोटल एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस द बैंक्स कैपिटल. नॉर्मली इन कंपैरिजन टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एक कमर्शियल बैंक का कैपिटल जो है एज अ रेशियो टू द टोटल एसेट इज नॉर्मली लो, क्योंकि बैंक इज काइंड ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस, दे आर इन द सर्विस इंडस्ट्री. So normally बैंक का कैपिटल जो है that is low. अब उस लो कैपिटल ही में से definitely we need to talk about the profitability and the bank's capital. अब profitability को हम मेजर करने के लिए क्या मेजर लेते हैं? Just like any manufacturing concern, we calculate the return on assets. And what is the formula? The same basic formula. We take the net income and we divide it by the total assets. That gives us the return on asset. Then there is another measure of profitability which is known as the return on equity. The return on equity में we take the ratio of the net income to the owner's capital. अब ये दोनों ratios जो हैं आपस में through the leverage linked up हैं, और वो leverage क्या है कि basically we take कि total debt as a ratio to the total asset क्या है. So we take the return on asset and we multiply. On the other hand, on the one side we have return on asset, on the other side we have the return on equity. So return on equity times the leverage will give us the return on asset. So both of these measures are linked together. So bank की profitability basically tells us कि बैंक के net income as a ratio to the total asset क्या है, या बैंक की net income as a ratio to the equity क्या है. So these are the measures of the profitability. अब banks जो हैं they are also involved in certain off balance sheet activities. तो off balance sheet activities में हमारे पास क्या है? Normally आपने सुना होगा कि बैंक के साथ एक कस्टमर जो है opens up a line of credit. अब line of credit opening के लिए definitely one thing is कि individual who has made an application for a line of credit will have access to the fund, और as and when needed basis पे उस line of credit के अंदर से जितनी amount बैंक withdraw करता है उसके ऊपर interest जो है वो चार्ज किया जाता है. But before withdrawal of the funds, बैंक में और borrower में एक commitment हुई है, और उस commitment के लिए बैंक एक fee चार्ज करता है, और वो fee जो है charging a fee for providing a service of opening up a line of credit is the off balance sheet activity from a bank's point of view. दूसरी क्या है? import export में very common है कि हमारे importer पाकिस्तान के अंदर जैसे क्या करते हैं कि they go and open up an LC with a bank, but basically is an LC, a letter of credit. और बैंक जब जो है letter of credit प्रोवाइड करता है, बेसिकली बैंक इज बैकिंग कि इन केस हमारे इंपोर्टर इज अनएबल टू मेक द पेमेंट फॉर द परचेज ही और शी इज मेकिंग फ्रॉम अ सेलर, तो बैंक इज गोइंग टू मेक द पेमेंट. तो इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए बैंक इज गोइंग टू चार्ज अ फी. तो ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज के लिए भी बैंक जो है वो सर्टेन फी चार्ज करता है. सो दैट कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक. अब हम दूसरी तरफ आज के लेक्चर को ले जाते हुए
बात करना चाहेंगे अबाउट द रिस्क कि डेफिनेटली हम जब भी बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की या सर्विस इंडस्ट्री की, तो इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट व्हाट डू वी डू? वी ट्राई टू इनकर सर्टेन कॉस्ट in order to generate revenues which are higher than the cost. और दोनों का डिफरेंस जो है that is profit. और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस एंटिटी is to earn profits. While we are talking about and we are hoping for a higher profit, so for higher profit we have something attached to it which is the risk. और हम इससे पहले भी बात करते चले आए हैं कि जब भी रिटर्न हाई है या प्रॉफिट हाई है तो रिस्क भी हाई हो जाते हैं. तो आज हम ये भी देखना चाहेंगे कि हमारे जो बैंक्स हैं उनको किस किस किस्म के रिस्क का सामना करना पड़ता है. तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे बैंक्स जो हैं उनको रिस्क का सामना करना ही क्यों पड़ता है. देयर आर टू बेसिक रीजंस फॉर द persistence and the existence of the risk in the context of a bank. Number one, कि हमारे बैंक्स का रिस्क अराइज होता है फ्रॉम द वेरी फैक्ट कि हमारे बैंक्स जो हैं दे आर हाईली लेवरेज्ड. हाईली लेवरेज्ड इन द सेंस, जैसे पहले भी मैं बात करती चली आई हूं कि हमारे पास जब कंपैरिजन होता है बैंक की बैलेंस शीट का विद द बैलेंस शीट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो कैपिटल जो है बैंक का अपना इन प्रोपोर्शन टू द टोटल एसेट नॉर्मली इज लो. तो जब कैपिटल जो है वो कम है तो व्हाट इज हाई? द लायबिलिटीज. तो जब लायबिलिटीज हाई है तो बैंक इज हाईली लेवरेज्ड, इज यूजिंग मोर लायबिलिटीज टू फाइनेंस द टोटल एसेट्स. इसलिए द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिस्क फॉर द बैंक इज ड्यू टू द हाई लेवरेज. नंबर वन. नंबर टू, द बिजनेस ऑफ द बैंक इटसेल्फ generates risk, because what is the main line of business for a particular bank? They accept the deposit from the depositors, pool them into a fund, and then from there either they purchase securities, which means make investments, or they lend it out for different purposes to the businesses as well as to the individuals. तो इन दोनों ही की वजह से we talk about the risks which are involved in the bank. Major sources तो यही हैं, लेकिन further what do? We categorize these risks into different categories. There can be 4 major categories of the risk, and then we can also talk about the other types of risk. सबसे important risk जो है बैंक के लिए, और the first category of the bank risk is the liquidity risk. इससे पहले कि हम डिटेल में बात करें liquidity risk के ही बारे में, हम ये करते हैं कि we introduce the categories of the risk and then we start discussing all of these risks one by one. तो liquidity risk क्या है कि in case depositors they ask for the withdrawal of their money, और अगर बैंक के पास sufficient funds available ना हो, लिक्विडिटी बैंक की उतनी ना हो, तो दिस इज नोन एज द लिक्विडिटी रिस्क. दूसरी तरफ हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज द क्रेडिट रिस्क. बैंक इज इन्वॉल्व्ड इन एक्सटेंडिंग लोन. देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि लोन मेकिंग से पहले हमारे पास 2 तरह के प्रॉब्लम जो है वो बैंक फेस करता है. एक है द प्रॉब्लम ऑफ द एडवर्स सिलेक्शन और दूसरी है द प्रॉब्लम ऑफ द मॉरल हैजर्ड. एडवर्स सिलेक्शन में हम बात कर रहे हैं एक बैंक की जिसने फॉर द लैक ऑफ द इंफॉर्मेशन और फॉर वट एवर रीजन कैटेगराइजेशन ऑफ द बॉरोवर जो है वो प्रॉपरली नहीं हुई एंड एन एडवर्स सिलेक्शन हैज बीन मेड. बट वंस वी हैव मेड अ प्रॉपर सिलेक्शन इवन, तो उसके बाद भी देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द मॉरल हैजर्ड. What is that problem? कि हमारा जो borrower है उसने जिस मकसद के लिए लोन लिया है, तो borrower जो है उस मकसद के लिए अगर लोन को properly utilize नहीं करता, तो then what happens? It results in to possibility of defaulting on the loan. ये हमारी सेकंड कैटेगरी है एंड इंशाल्लाह हम इसको आगे जाके टेकअप करेंगे इन डिटेल.
तो इसके बाद हम अपनी थर्ड कैटेगरी ऑफ रिस्क की बात करते हैं, जिसको हम कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। इससे पहले भी इफ यू ट्राई टू रिकॉल, जब हम बॉन्ड्स की डिस्कशन कर रहे थे तो वी सेड कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने या कम होने से बॉन्ड की प्राइस या वैल्यू कम या ज्यादा हो जाती है। तो इसी तरह अब हम इस इंटरेस्ट रेट रिस्क में ये देखना चाहेंगे कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने या कम होने से हमारे एसेट्स एंड द लायबिलिटीज की वैल्यू जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से हमारे पास एक गैप पैदा हो जाता है और उसकी गैप की ही मौजूदगी से हमारे पास प्रॉफिट जो है वो कम या ज्यादा होते हैं। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट द ट्रेडिंग रिस्क, कि जैसा आपको पता है कि आजकल हमारे बैंक्स जो हैं दे आर हैविंग अ सेपरेट सेक्शन or at least one individual who is undertaking the trading business from the certain portion of the deposit bank has received. और उस ट्रेडिंग में जो है, ट्रेडिंग कैन बी इन द स्टॉक मार्केट एंड इट कैन बी इवन द इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड्स। तो जो जो मार्केट की वैल्यू कम या ज्यादा होती है तो उसके साथ साथ बैंक की अर्निंग कम या ज्यादा हो जाती है, rather there is a possibility of even the loss. तो इस किस्म के रिस्क को वी क्लासिफाई एज द ट्रेडिंग रिस्क। फिर लास्टली विल टॉक अबाउट द अदर रिस्क, जिसमें हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, विल टॉक अबाउट द सॉवरेन रिस्क और इसके अलावा ऑपरेशनल रिस्क वगैरह की हम बात करेंगे। तो हम इन्हीं रिस्क को अब वन बाय वन जो है वो डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है हमारा लिक्विडिटी रिस्क। अब लिक्विडिटी रिस्क जो है वो अराइज होता है बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट कि हमारे डिपॉजिटर्स जो है या तो वो डिमांड करें अपनी मनी बैंक और बैंक के पास इतने सफिशिएंट फंड मौजूद ना हो कि वो उनकी डिमांड जो है वो पूरा कर सके। दूसरी तरफ अभी हमने बात की ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज ऑफ द बैंक की, तो ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज ऑफ द बैंक जो हमने लायबिलिटी साइड पे ली है, तो उसमें भी ये हो सकता है कि बैंक ने वो जो लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की हुई है या एलसी ओपनिंग की जो सर्विस प्रोवाइड की है टू द इंपोर्टर, तो उसको अगर उसके लिए पेमेंट करनी पड़ जाती है और सफिशिएंट लिक्विड कैश इज नॉट अवेलेबल, दैट अगेन लीड्स टुवर्ड्स द लिक्विडिटी रिस्क। सो द लिक्विडिटी रिस्क इज insufficient availability of the cash when the bank is having a particular depositor's demand coming in and the bank doesn't have sufficient fund, number one, or the bank doesn't have sufficient fund to meet the obligation of the off balance sheet activities. तो दोनों ही सूरत हाल में हमारे पास जो है बैंक को लिक्विडिटी रिस्क का सामना करना पड़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे किस तरह बचा जा सकता है। वन वे आउट इज कि हमने ये कहा कि बैंक का जो कैपिटल है दैट प्रोवाइड्स अ कुशन, कि जिससे बैंक जो है वो अपनी इस तरह की डिमांड्स को पूरा कर सकता है। लेकिन डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिव नेट वर्थ और द कैपिटल ऑफ ए बैंक, अगर बैंक के पास लिक्विडिटी सफिशिएंट नहीं होती और पॉजिटिव नेट कैपिटल मौजूद भी है, तो तब भी द सिचुएशन विल अराइज, जिसमें क्या होगा कि लोग जो है दे विल डिमांड द मनी, दे कैन बी द डिपॉजिटर्स, दे कैन बी द एक्सपोर्टर, जिन इंपोर्टर्स के बिहाफ पे आपने गारंटी दी है या जिनको अपने लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की है, दे विल बी आस्किंग फॉर द मनी। तो वट एवर द केस इज, हर सूरत हाल में अगर हमारे पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? बैंक विल नॉट बी एबल टू मीट देयर डिमांड्स, और जिसकी वजह से जिसको हम कहते हैं बैंकिंग पैनिक। अब पाकिस्तानी के केस में जो फाइनेंस कंपनीज के साथ हुआ, कोऑपरेटिव फाइनेंस कंपनीज के साथ, कि एक डिपॉजिटर विड्रॉल की बात की, बाकी डिपॉजिटर्स जो है उन्होंने भी विड्रॉल की अगर बात की, एंड इट बेसिकली रिजल्टेड इन अ पैनिक इन द डिपॉजिटर्स कि दे वर कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी ऑफ देयर डिपॉजिट। इसीलिए उन्होंने सबने एट ए टाइम अगर वो विड्रॉ करने की एप्लीकेशन डाल दें, रिक्वेस्ट डाल दें टू द बैंक, तो डेफिनेटली बैंक के पास जो है इतने सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल नहीं होते टू इमीडिएटली मीट द डिमांड्स ऑफ ऑल ऑफ दीज डिपॉजिटर्स। तो रिजल्ट क्या होगा? द फेल्योर ऑफ द बैंक, जिसको हम बैंक रन की भी बात करते हैं कि बैंक विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव
डिस्पाइट द फैक्ट कि बैंक के पास पॉजिटिव कैपिटल मौजूद है, नेट वर्थ इज स्टिल पॉजिटिव, लेकिन लिक्विडिटी इतनी कम थी कि बैंक वाज नॉट इन अ पोजीशन टू मीट द डिमांड ऑफ दीज कस्टमर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि बैंक जो है लिक्विडिटी रिस्क को किस तरह से मैनेज करता है। अब इसको मैनेज करने के लिए और इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। सो दैट वी हैव टेकन ऑन दिस स्लाइड कि वी हैव अ बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक, एसेट साइड्स एंड द लायबिलिटी साइड्स। एसेट के ऊपर हमने 3 मेन हेड्स रखे हैं, रिजर्व्स, ऑल काइंड ऑफ रिजर्व्स, लोन्स एंड देन सिक्योरिटीज। अब रिजर्व में हमारे पास जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट वाले रिजर्व भी हैं और एक्सेस रिजर्व भी हैं। लोन्स के अंदर हमने सारे टाइप्स ऑफ लोन्स को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है। सिक्योरिटीज में भी ऑल टाइप्स ऑफ द सिक्योरिटीज। ऑन द डिपॉजिट साइड्स वी हैव ऑल काइंड ऑफ डिपॉजिट पुट टुगेदर एंड दैट इज 100 million. Borrowed funds, whether they are from the other banks or from the central bank, we have put them together 30 million and the bank's own capital is 20 million. अब अगर हम assume करें कि हमारी legally required reserve ratio is 10% of the deposit, कि central bank basically regulates all the commercial banks और उसकी तरफ से requirement है कि 10% of all the deposits should be kept as a legally required reserve, which should not be utilized for any purpose. अब इस केस में अगर हम 10% रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो रखते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड रिजर्व की अमाउंट क्या होगी? वी हैव द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ 100 million. सो 100 million का 10% इज द 10 million. लेकिन जब हम देखते हैं रिजर्व्स के अंदर तो हमारे पास 15 million के टोटल रिजर्व्स हैं, विच मीन्स 10 million इज द लीगली रिक्वायर्ड रिजर्व और 5 million जो है दे आर द एक्सेस रिजर्व। अब इस सिनेरियो में जब बैंक के पास एक्सेस रिजर्व मौजूद है और डिपॉजिटर्स अगर 5 million की डिमांड करते हैं तो बैंक के पास एक्सेस रिजर्व की शक्ल में लिक्विडिटी मौजूद है। बैंक कैन सिंपली टेक दैट मनी आउट ऑफ द एक्सेसिव रिजर्व एंड कैन मेक द पेमेंट टू द डिपॉजिटर्स एंड द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। बट द सिचुएशन मे नॉट रिमेन अंडर कंट्रोल अगर बैंक के पास कोई एक्सेस रिजर्व नहीं है। तो अगर बैंक के पास एक्सेस रिजर्व ना हो तो सूरत हाल में बैंक जो है वो क्या करता है? अगेन हमारे पास बैंक की 2 साइड्स हैं, एसेट साइड एंड द लायबिलिटी साइड। तो एक सूरत हाल में बैंक कैन गो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द एसेट्स टू मीट द लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट और दूसरी तरफ जो है बैंक कैन गो फॉर द लायबिलिटी मैनेजमेंट टू मीट द लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। तो हम शुरू करते हैं विद द एसेट साइड ऑफ द मैनेजमेंट। अब एसेट साइड के अंदर बैंक क्या कर सकता है? कुछ एक तरफ क्या है हमारे पास एसेट साइड्स में मौजूद क्या है? बेसिकली हमारे पास 3 हेड्स थे अगर आप कोशिश करें रिकॉल करने की। पहला हेड था हमारे पास कैश आइटम्स और रिजर्व जो थे दे वर पार्ट ऑफ द कैश आइटम्स। अब अगर हमारे पास एक्सेस रिजर्व है तो उधर से ही हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक्सेस रिजर्व मौजूद नहीं है तो हमारे पास नेक्स्ट हेड क्या आता है एसेट में? सिक्योरिटीज का। तो बैंक कैन सेल सर्टेन नंबर ऑफ सिक्योरिटीज टू मीट द लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। एक चॉइस ये है। दूसरी चॉइस है टू एडजस्ट द लोन। अब लोन में क्या होगा कि अ पार्ट ऑफ द लोन बैंक कैन सेल इन द मार्केट टू मैनेज द लिक्विडिटी, या बैंक ये भी कर सकता है कि रिफ्यूज कर सकता है फॉर द रिन्यूअल ऑफ द न्यू लोन्स। तो ये है हमारी एसेट मैनेजमेंट की साइड पे। तो अब हम इसको डिटेल में एग्जांपल के साथ देखते हैं। सो लेट्स लुक एट द बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक। अब ये बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक है विद नो एक्सेस रिजर्व। ऑन द एसेट साइड वी हैव रिजर्व्स ऑफ 10 million, वी हैव लोन्स ऑफ 100 million एंड वी हैव सिक्योरिटीज ऑफ 40 million. टोटल एसेट्स आर 150 million. लायबिलिटी साइड पे हमारे पास डिपॉजिट्स हैं 100 million के, borrowed funds हैं 30 million के और बैंक का कैपिटल है 20 million and our balance sheet is in balance. Now let's assume कि customer makes a 5 million withdrawal. A bank cannot simply deduct this amount from the reserves क्योंकि बैंक के पास जो रिजर्व है they are only 10 million और 10% हमारी required reserve ratio है। तो जब हमारी required reserve ratio 10 है तो we cannot withdraw any funds.
So what are the choices available to the banks? Number 1, selling the securities, and number 2, making an adjustment through the loans. So let's look at the first adjustment. A first adjustment में we are talking about a scenario जिसमें withdrawal is met by selling the securities. अब हमारे पास reserves 10 million ही के रहेंगे, withdrawal कितने की हो रही है? That is 5 million की. Therefore liability side पे हमारे deposit कम हो गए by 5 million. Loans हमारे they will remain as 100 million. Securities अगर आप देखें, पिछली बैलेंस शीट में हमारे पास सिक्योरिटीज थी 40 मिलियन की, लेकिन अब जो है हम 5 मिलियन की सिक्योरिटीज को हमने बेच दिया. Therefore हमारे सिक्योरिटीज जो है they have come down to 35 मिलियन. अब टोटल बैंक के एसेट्स जो है 145 मिलियन हो गए. प्रीवियसली यही एसेट्स जो थे हमारे they were 150 में से 5 की जब विड्रॉल हो गई तो एसेट्स जो है हमारे they are equal to 145. अब लाइबिलिटी साइड भी इससे मैच कर रही है क्योंकि वहां पे हमारे 100 मिलियन के जो डिपॉजिट्स है उसमें से 5 मिलियन के डिपॉजिट जो है वो विड्रॉल हो गई. तो देयरफॉर इफ यू लुक एट द लाइबिलिटी साइड तो अगेन हमारे डिपॉजिट्स आर 95 मिलियन, बोरोड फंड्स आर 30 मिलियन, बैंक कैपिटल इज 20 मिलियन एंड द टोटल इज इक्वल टू 145. ये तो था हमारा फर्स्ट एसेट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. दूसरी चॉइस हमारे पास क्या है? एडजस्टमेंट थ्रू द लोन्स, कि हम लोन का कुछ पोर्शन और वो पोर्शन विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ विड्रॉल. और यहाँ पे हमारे अमाउंट ऑफ विड्रॉल कितनी थी? 5 मिलियन. तो हम क्या करेंगे कि अपने लोन्स में से 5 मिलियन के लोन जो है वो सेल आउट कर देंगे, या अगर कुछ लोन्स की रिन्यूअल ड्यू है तो हम उनको रिन्यू नहीं करेंगे तो हमारी अमाउंट ऑफ लोन विल रिड्यूस. तब हमारा सिनेरियो क्या होगा? दैट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द बॉटम पोर्शन ऑफ दिस ग्राफ कि withdrawal is met by reducing the loans. अब हमारे पास एसेट साइड पे रिजर्व्स हैं 10 मिलियन के, लोन्स हैं 95 मिलियन के एंड सिक्योरिटीज हैं 40 मिलियन. यू सी द डिफरेंस कि हमारी सिक्योरिटी लेवल जो है प्रीवियसली हमने जब बेची थी तो 35 था, लेकिन अब जो है सिक्योरिटीज का लेवल गोइंग बैक टू द ओरिजिनल लेवल ऑफ 40 मिलियन है, लेकिन लोन्स जो है वो 100 मिलियन से कम हो गए, 95 मिलियन हो गए. ऑन द लायबिलिटी साइड वी हैव द सेम सिनेरियो के डिपॉजिट्स 95 मिलियन, बोरोड फंड्स 30 मिलियन एंड बैंक कैपिटल 20 मिलियन. ऑल टुगेदर हमारे एसेट्स आर 145 मिलियन एंड द लायबिलिटीज आर आल्सो 145 मिलियन. अब इन दोनों ही सिचुएशंस में नंबर 1 जब हम सिक्योरिटीज को बेचते हैं या नंबर 2 जब हम लोन्स को बेचते हैं, दोनों ही सूरतों में हम एसेट्स को मैनेज कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हमारी विड्रॉल इज मेट बाय मैनेजिंग द एसेट साइड. वन थिंग इज क्लियर कि इससे पहले हमारी टोटल एसेट का साइज क्या था? 150 मिलियन. अब हमारे टोटल एसेट का साइज दोनों ही सिनेरियो में 145 हो गया. तो अगर एक बैंक जो है विड्रॉल को मीट करने के लिए एसेट मैनेजमेंट की टेक्निक यूज करता है तो रिजल्ट क्या होता है कि उनके टोटल एसेट्स जो हैं वो श्रिंक हो जाते हैं. सो द साइज ऑफ द बैंक जो है दैट श्रिंक्स. सो व्हाट शुड बी डन देन? वी डू हैव अनदर चॉइस अवेलेबल, और वो चॉइस क्या है कि बैंक कैन यूज लायबिलिटी मैनेजमेंट टू ऑब्टेन द एडिशनल फंड्स. व्हाट आर द टू चॉइसेस? द फर्स्ट चॉइस इज borrowing from the central bank or from the other banks, and number 2 is by attracting the additional deposits. कि जब हम liability side पे आते हैं we are trying to keep the size of the total asset same. liability side पे हमारे पास एक तो मेन कैटेगरी है डिपॉजिट्स की जो कि लार्ज पोर्शन ऑफ द लायबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आइटम आता है लोन्स का. तो लोन्स के अंदर भी हम कर सकते हैं कि दो तरह के लोन्स हैं, चाहे हम फेडरल फंड मार्केट से बोरो करें यानी अदर बैंक से बोरो करें, या हम सेंट्रल बैंक से बोरो करें, या उसके साथ हम एडिशनल क्या कर सकते हैं. Another liability side management is we said कि we try to manage through issuing the new securities, CD, certificate of deposit, यानी हम अपने डिपॉजिट ही के साइड को बढ़ाना शुरू कर दें. So these are the two techniques which are available.
اب ان دونوں کو ہم دیکھتے ہیں ود دی ہیلپ آف آر ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل. تو اب اس ایگزامپل میں دیکھیں کہ when the withdrawal is met by borrowing, تو اس میں کیا ہوگا, ہماری ایسٹ سائڈ ول ریمین انچینجڈ کیونکہ now we have shifted to the liabilities management. Reserves are 10 million, loans are 100 million and securities are 40. The total asset size ہمارا ہے 150 million کا. لائبلٹی سائڈ پہ ڈپازٹس 95 ملین کیونکہ ہمارے پاس 5 ملین کی withdrawal کی ریکویسٹ ہے. borrowed funds جو ہیں previously they were at a level of 30 million. تو previously ہمارے borrowed funds تھے at 30 million. اب ہمارے borrowed funds have increased to 35 million. And the bank capital has remained at the same old level of 20 million. Total size of the liability is exactly equal to the size of the asset which is 150 million. So what we have seen here is کہ جب بینک liability management کرتا ہے اور first technique is by using the loans. تو اس میں کیا ہے کہ size of the bank جو ہے that remains the same and the level of loan has increased. Liabilities side پہ ہی management کے لیے ہمارے پاس second choice کیا ہے. The second choice is when we try to meet the withdrawal by increasing the deposits. یعنی ہم ایک نئی سی ڈیز سرٹیفکیٹ ڈپازٹ ایشو کر کے اس کو سیل کرنا چاہیں کہ ایک طرف تو ہمارے پاس withdrawal کی ریکویسٹ ہے فار 5 ملین, دوسری طرف ہم ایک اٹریکٹیو پیکج آفر کرتے ہیں اینڈ دین اگر ہم اس کو سیل کر دیتے ہیں تو وی آر ٹرائنگ ٹو مینج دی withdrawal ود دی لائبلٹی آف آفرنگ ا نیو سی ڈیز. سی ڈی سے مراد ہے سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ. So that we have reflected on the lower portion of this particular slide. Asset side pe there is no change. Reserves 10 million, loans 100 million, securities 40 million. Liability side pe हमारे पास है deposits 100 million, borrowed funds now at the same old level 30 million and the bank capital is 20 million. What has changed here is in comparison to the upper portion of this slide, deposits they are at 100. So what do we see here is کہ 5 million کی withdrawal تھی اور 5 ملین ہی کے ہم نے نئے ڈپازٹ جو ہے وہ سی ڈیز بیچ کے ایکسپٹ کیا. سو اوور آل ہمارے ڈپازٹ کا لیول جو ہے اوریجنل لیول آف 100 ملین پہ ہے اینڈ ہمارا بینک جو ہے از ہیونگ دی سیم سائز آف 150 ملین. اب ہم بات کرنا چاہیں گے سیکنڈ کیٹیگری آف دی رسک جس کو ہم کہتے ہیں کریڈٹ رسک. اب اس کریڈٹ رسک میں پہلے بھی بات ہم کر چکے ہوئے ہیں کہ بینک از انوالوڈ in the business of accepting the deposit and lending it out. اور credit extension میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ there is the possibility of facing the problem of adverse selection, one category of the problem, اور دوسری category of the problem is ہمارا moral hazard. تو یہاں پہ ہم فوکس کر رہے ہیں on the second category کہ once we have gone through the selection, there is always a possibility کہ ہمارا جو borrower ہے will not use the funds for the purpose he or she has borrowed. تو اس طرح ہمارا جو credit risk ہے that leads towards a situation in which borrower is unable to pay the interest or repay the principal at maturity. So what basically is the solution? The solution to this problem is that we go for the number one, diversification, and that we have formally said that credit risk is the risk that loans will not be repaid and it can be managed through diversification and credit risk analysis. کہ جب ہم بات کر رہے ہیں credit risk کی, there is a possibility کہ ہمارا borrower will default on the payment of the loan. So how can we manage it? Can we manage it through diversification? In order to answer this, we need to look at the different types of banks, and especially there are certain banks who specialize in certain types of activities. So isliye looking at the nature of the business, each and every bank cannot take care of the credit risk by going for diversification. Diversification سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ لون جو ہے وہ ایک لارج سائز لون ٹو فیئر نمبر آف بارور کو نہ دے بلکہ میڈیم اینڈ اسمال سائز لونز ٹو لارج نمبر آف بارورز کو دیں, جس کی وجہ سے probability آف ڈیفالٹ آن ایوریج جو ہے وہ ڈکلائن کر جاتی ہے.
अब दूसरी क्या सिनेरियो हो सकती है और क्या हल हो सकता है इसका, तो उसके लिए वी कैन गो फॉर द क्रेडिट एनालिसिस, कि जैसे हमने बॉन्ड की बात की थी कि बॉन्ड्स के ही केस में हमारे पास क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि मुख्तलिफ कंपनीज के इश्यू किए हुए बॉन्ड्स को रेट करती हैं, कैटेगराइज करती हैं, और बेस्ड ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इश्यूअर उसको असाइन करती हैं लेटर ग्रेड, हाईएस्ट ग्रेड टू द लोएस्ट ग्रेड। तो इसी तरह वी कैन आल्सो टॉक अबाउट द क्रेडिट इवैल्यूएशन ऑफ द बोरोवर। तो उस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं, दिस क्रेडिट रिस्क एनालिसिस प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन दैट इज वेरी सिमिलर टू द बॉन्ड रेटिंग सिस्टम्स एंड इज डन यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ statistical models and information specific to the loan applicant। अब इसकी वजह से भी हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारे जो मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर हैं, हाई रेटिंग में आते हैं, तो हम उनको इश्यू करें ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट जो है वो हमारे पास कम हो जाए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि वंस यू गो फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बॉरोवर, उसके बाद भी देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मॉरल हैजर्ड कि once they have borrowed the funds, so they may not be utilizing the funds for the purpose they have borrowed for। तो उसके लिए क्या है, we need to keep monitoring, we need to keep a check on them। और उस सिलसिले में we say कि we screen the loan application, we monitor borrowers after they have received the loan, and then we also demand the collateral or high net worth demand, and we also try to develop the long run relationship। अब इस सारे कुछ में हम कहना क्या चाह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर द इवैल्यूएशन, स्क्रीनिंग आउट, और उस स्क्रीनिंग आउट के बाद वी ट्राई टू सेलेक्ट द गुड रेटिंग बोरोवर्स एंड देन वी एक्सटेंड द लोन्स टू ऑल ऑफ दोज बोरोवर्स। उसके बाद इन ऑर्डर टू अवॉइड द मॉरल हैजर्ड वी ट्राई टू कीप अ चेक in the sense we monitor the activities, we monitor the utilization of the funds, and finally we can also further distribute our risk or minimize our risk by asking for the collateral that the bank is going to sell the asset which has been used as a collateral in case the borrower is unable to make the payment। So these are some kind of safety checks or the safeguards through which we can minimize the credit risk। अब उसके बाद हम बात करना चाहेंगे अ थर्ड कैटेगरी ऑफ रिस्क, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब व्हाट इज द मेन बिजनेस ऑफ अ बैंक, कि बैंक जो है वो कलेक्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम द डिपॉजिटर्स और उस पे उनको जो है एक सर्टेन इंटरेस्ट पे करता है which is known as the deposit rate, और उन अमाउंट्स को पूल करने के बाद बैंक या तो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है या लोन देता है। तो नॉर्मली उनके ऊपर जो लोन बैंक रिसीव करता है दैट इज नोन एज द लैंडिंग रेट। नॉर्मली हमारा बोरोइंग रेट जो होता है, बैंक का बोरोइंग रेट इन द सेंस कि हमारा जो बोरोइंग रेट है वो बैंक का लैंडिंग रेट है, तो बैंक का लैंडिंग रेट जो है दैट इज हायर देन द डिपॉजिट रेट, और दोनों का डिफरेंस जो है दैट बेसिकली इज द इंटरेस्ट इनकम। अब हम अगर बैंक की बैलेंस शीट को देखें तो एक तरफ तो हमारे लोन्स है एज एन एसेट और दूसरी तरफ हमारे पास डिपॉजिट है एज ए लायबिलिटी, एंड दीज आर द टू मेजर कंपोनेंट्स। एसेट साइड के ऊपर मेजर कंपोनेंट है हमारा लोन्स का, और लायबिलिटी साइड के ऊपर हमारा मेजर कंपोनेंट है डिपॉजिट्स का। Although हमारी बैलेंस शीट इज ऑलवेज इन बैलेंस, यानी टोटल एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज एंड द नेट वर्थ और द कैपिटल ऑफ द बैंक, लेकिन व्हेन वी लुक एट द मैच्योरिटी पीरियड तो क्या है, नॉर्मली हमारे एसेट जो है वो शॉर्ट टर्म होते हैं जबकि हमारी लायबिलिटी जो है कैन बी लॉन्ग टर्म और वाइस वर्सा। तो हमारी जब ये मैच्योरिटी आपस में मैच नहीं करती है, देयरफॉर we come across a type of risk जिसको हम कहते हैं interest rate risk। So if we think of bank's assets and liabilities as bonds, then what happens? The change in the interest rate will affect the value of these bonds, and more importantly,
جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو ویلیو جو ہے بانڈ کی وہ کم ہو جاتی ہے, اور اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو بانڈ کی ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ریلیشن شپ یہ بھی دیکھا تھا کہ بانڈس کی میچورٹی کے ساتھ بھی انٹرسٹ ریٹ رسک جو ہے وہ کم یا زیادہ ہوتا ہے. اور اس میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ جو لانگ ٹرم میچورٹی کے بانڈ تھے اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ رسک جو ہے وہ زیادہ تھا. تو اسی پیرائے میں جب ہم انٹرسٹ ریٹ رسک آف اے بینک دیکھنا چاہتے ہیں تو وی آر لوکنگ ایٹ دی لائبلٹیز اینڈ دی ایسٹس ود ڈفرنٹ میچورٹیز. تو اس میں کیا ہوگا کہ if the interest rate rises, the bank face the risk that the value of their assets may fall more than the value of the liabilities. کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ بینک کے ایسٹس جو ہیں they are long term in nature اور بینک کی لائبلٹی جو ہے وہ شارٹ ٹرم ان نیچر ہے. اس لیے جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو ایسٹ کی ویلیو بینک کے زیادہ گر جاتی ہے اور لائبلٹیز کی ویلیو اتنی نہیں گرتی ہے. ایز اے ریزلٹ کیا ہے کہ بینک فیسز اے پرابلم وچ از نون ایز دی انٹرسٹ ریٹ رسک. اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہماری بیلنس شیٹ کو تو ہر وقت بیلنس میں رہنا ہے. تو اگر ہمارے ایسٹس کی ویلیو زیادہ گر گئی اور لائبلٹیز کی ویلیو کم گری تو کیپ اے بیلنس کیا ہوگا کہ بینک کا جو کیپٹل ہوگا وہ بھی گر جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جگہ ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ہمارا بینک کا جو کیپٹل ہے یا نیٹ ورتھ ہے از یوزڈ ایز اے کشن. تو یہاں پہ اس سینیریو میں بھی وہ بینک کا نیٹ کیپٹل جو ہے دیٹ از پرووائڈنگ اے کشن, اور وہ کیپٹل شرنک ہونا از ریفلیکٹنگ انپروفیٹیبلٹی ان ادر ورڈز. تو اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھنے کے لیے لیٹس ٹیک اے ویری سمپل ایگزامپل. اور اس ایگزامپل میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپوز 20% of the bank assets fall into the category of assets sensitive to the changes in the interest rate. کہ اب ہم بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ایسٹس کو اور لائبلٹیز کو کیٹیگرائز کرنا چاہ رہے ہیں into two categories. ایک کیٹیگری ہے جس میں کہ ایسٹس آر انٹرسٹ سینسٹیو, دوسری ہے جس میں لائبلٹیز آر انٹرسٹ سینسٹیو. اور بیلنس کیا ہے کہ وہ ایسٹ جو کہ لیس سینسٹیو ہے ٹو دی انٹرسٹ ریٹ چینج اور وہ والی لائبلٹیز جو کہ لیس سینسٹیو ہے ٹو دی انٹرسٹ ریٹ چینج. تو اس سینیریو میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ when we look at the bank's assets, 20% fall into the interest sensitive category and 80% they fall into the category of less interest sensitive or they are not interest sensitive. Now, if the interest rate is stable at 5%, then what will happen? کہ each $100 yield $5 in interest. کیونکہ ہمارے ایسٹ کے اوپر بھی ارن انٹرسٹ. تو ایسٹ میں اگر ہم لون ہی کو لے لیں جو کہ انٹرسٹ سینسٹیو ہیں تو ان کے اوپر ہمارے پاس کیا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ چینج ہونے کا ہم امپیکٹ دیکھ رہے ہیں. Now suppose 50% of the bank's deposit which is liabilities are interest rate sensitive and 50% are not. So half of the liabilities are deposits that earn variable return, so the costs vary with the market rate. Now for making profit, interest rate on liabilities must be lower than the interest rate on the assets. جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ ہمارے پاس جو بینک ہے اس کے پاس ایک طرف ایسٹس ہے, ان کے اوپر جو انٹرسٹ ریٹ ہے لونز آر دی ایسٹس that is supposed to be higher than the interest rate on the deposit which is a liability, and the difference between the two is known as the bank's margin. تو اب اگر ہم اسی بینک کے مارجن کو دیکھنا چاہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ 5% جو ہے ہم ارن کرتے ہیں آن لون کے اوپر اور 3% جو ہے ہم ڈپازٹ کے اوپر دیتے ہیں. So the difference between 5 and 3%, 2% is the bank's margin. So assuming interest rate on liability is 3%, the net interest margin is 5 minus 3 equal to 2%. Now what happens if the interest rate rises by 1%? So that we have reflected on this particular slide. کہ ہمارے پاس ایسٹس ہے انٹرسٹ ریٹ سینسٹیو 20, liabilities are 50. Not interest sensitive, assets 80 and the liabilities 50. Initial interest rate is 5% for the assets and 3% for the liabilities, and now the interest rate has gone up by 1%. So asset کے اوپر interest rate has increased to 6% and liabilities کے اوپر it has increased to 4%. So let's look at the return. At initial interest rate ہمارے پاس ریونیو فرام دی ایسٹ از اکول ٹو 5
and cost of liability is equal to $3. After the interest rate change, ہمارے پاس revenue from the asset is 5.2%, وہ بڑی ہیں صرف 0.20 سے, جبکہ liabilities بڑھ گئی ہیں 3 سے 3.50 کے اوپر. Now if we calculate the profit at initial interest rate, so that is equal to 5 minus 3 is equal to $2 per $100 in assets. And profits after the interest rate change is 5.2 minus 3.5 is equal to 1.70. What we have seen with the help of this example is that for a commercial bank having 20% interest sensitive asset and 50% interest sensitive liabilities, if the interest rate goes up by 1%, what happens is that the profit of the bank, they declines from $2 per $100 to $1.70. یعنی کہ اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو پروفیٹیبلٹی آف دی بینک جو ہے دیٹ ڈکلائنس. اینڈ آف کورس دی ریورس از گوئنگ ٹو بی ٹرو اگر انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اینڈ دس پرٹیکولر سینیریو can also be seen with the help of the gap analysis, which inshallah we are going to undertake in next lecture. In today's lecture, before I wind up, what I would like to do is کہ very briefly summarize کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کون کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے ہیں. تو آج ہم نے اسٹارٹ کیا بیسیکلی our focus on the interest. And of course جب ہم بات کر رہے تھے کہ انٹرسٹ دیٹ آن دا ون ہینڈ از دی ارننگ اینڈ آن دی ادر ہینڈ دی انٹرسٹ از اے کاسٹ فار دی بینک. ڈپازٹ کے اوپر جو انٹرسٹ ریٹ ہے دیٹ از اے کاسٹ, اور لون کے اوپر جو انٹرسٹ ریٹ ہے دیٹ از دی ارننگ. تو ہم نے یہ کہا کہ ان کا گیپ جو ہے دیٹ ریپرزینٹ دی پروفٹس آف اے بینک, بٹ ان آرڈر ٹو ارن دیٹ پروفٹ بینک ڈیفینیٹلی فیسز سرٹن رسک. تو ان رسک میں سب سے پہلا رسک تھا لیکوڈیٹی رسک, جس میں ہم نے بات کی کہ if the depositors they want to withdraw their funds and the bank is not having sufficient liquidity, so how the bank is going to manage that? So one approach is the asset management and the other approach is the liability management. Asset management approach میں the size of the bank basically shrinks, total assets جو ہیں وہ decrease ہو جاتے ہیں, whereas liability management میں the size of the bank does not change. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی second category of the risk, which was the credit risk, the risk کہ ہمارا borrower will not be able to pay. And finally we have started our discussion on the interest rate risk. So inshallah we'll continue with this discussion on the interest rate risk in the next lecture, and we'll also talk about the other type of risk including the credit risk, exchange rate risk, sovereign risk and the operational risk. تو آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.